Good morning, all of you, and welcome back to the channel. So let's quickly start with today's analysis video, which is going to be for 4th of May 2023. So no union, but center is ready to ease the living of gay couples. So since the topic that is legalization of same-sex marriages, that is in news and that's like a hot topic of debate because government का मानना कुछ और है, Supreme Court का point of view, it is little different from that of the government. So here it is being written, headline अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, it is saying कि no union but center ready है to ease the life of gay couples. So government ने propose किया है panel to look into genuine and human concerns. Supreme Court ने बोला है कि it is like it's a step forward and it is big positive towards social acceptance of the right of the same-sex couples to cohabit. So डेफिनेटली उनकी लाइफ को अगर थोड़ा और इजी बनाने के लिए द सेंटर इज रेडी एंड इट इज इंश्योरिंग कि इट इज टेकिंग दो स्टेप्स so that it becomes a reality for them. हम social acceptance की बात करें with time, specifically after the Supreme Court judgment, जब homosexuality को decriminalize किया गया, उसके बाद से हमने society में changes देखे when we talk about the social acceptance for this community. So even Supreme Court agrees with what government is saying here when it is talking about easing their lives. So Supreme Court का कहना है कि it is a step forward and ये बहुत positive and बड़ी बात है when we are talking about their social acceptance and we're talking about the right of the same-sex couples. So if we read the viewpoint of CGI, so he said कि court it can now go into whether same-sex couples they have a right to cohabit together in a normal peaceable environment in our country without facing any form of discrimination, societal or otherwise. So basically he is saying कि judiciary के लिए gates open हो जाते हैं to delve into like more aspects as far as the LGBTQ community is concerned and ensuring कि they cohabit together एक normal peaceful environment में and जहाँ पे किसी भी तरीके का discrimination ना हो, societal या और भी कोई भी तरीके का discrimination. And one of the Supreme Court judges, S.K. also, he says that government, though reluctant to give same-sex relationships the status of marriage, it is not reluctant to sort out the human concerns arising out of them. So to that extent, there is consensus. So consensus इस बात पे नहीं है जब हम legalization of the same-sex marriages की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे center का viewpoint थोड़ा different है. But इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट रिलक्टेंट है to provide them basically to address their human concerns, ensuring कि even like वो भी society में normally रहे like all of us. तो उस चीज में government is not reluctant and इस point पे there is like even consensus between judiciary and the government. So इससे regarding government ने एक पैनल भी लाइक प्रपोज किया है कि इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड ताकि जो उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको सुना जाए, उनको एड्रेस किया जाए. So this committee, it would be headed by the cabinet secretary to consider administrative measures for addressing their genuine and human concerns. So government, it is positive, something can be done administratively regarding their genuine concerns, and this would require coordination among different ministries. Definitely coordination जरूरी है, उसके बिना changes करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So therefore we have decided and subject to the court's approval to form a committee which would be headed by none less than the cabinet secretary. So definitely judiciary is giving the go ahead to the government as far as all of this thing is concerned. Then Supreme Court, it sets aside the High Court's stay on inquiry into the Amravati land scam. So basically High Court ने
स्टे लगा दिया था जो भी इंक्वायरी के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे इनटू दिस अमरावती लैंड स्कैम, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को या उस ऑर्डर को इट हैज बीन लाइक इट हैज सेट असाइड दैट, सो दैट वुड नॉट बी लेजिटिमेट या उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अब. सो इन अ लीगल विक्ट्री फॉर द जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट it has set aside Andhra Pradesh High Court's order issuing a blanket stay on an inquiry into the Amravati land scam and the alleged role of the previous TDP regime. So that is the thing, but इस issue में इतना detail में जाना हमारे लिए कुछ significant है, कुछ important नहीं है, so that's why this is just a single development. So citing report, Supreme Court declines Rajona's mercy plea. So Supreme Court ने it found it inappropriate to direct the government to commute the death penalty of Balwant Singh Rajona, and he's facing a death row for 1995 assassination of the former Punjab Chief Minister Beyant Singh, and that is in view of the Home Ministry's conclusion that a decision on the mercy petition now would impact national security. So in grounds पे even Supreme Court has declined his mercy plea. And here Justice Vikram Nas, who authored the verdict, said that it was not up to the court to delve on the ministry's decision to defer a decision on the clemency plea. So it is within the domain of executive to take a call on such sensitive issues, and basically this is not under the judiciary's jurisdiction. So simply यही बोला गया कि it is the executive जिसके पास पावर है to take final call regarding this thing, and judiciary would not be going into this thing. So next G20 meeting is going to be in Srinagar. So you can see a beautiful view of Dal Lake in Srinagar, and G20 working group meeting, it is scheduled to be held from 22nd of May. So all the adequate and necessary steps, they are being taken, be it from like security perspective or other arrangements. So Ukraine sent drones to target Putin. This is what Russia has to say. And Russian authorities accused Ukraine of like attempting to attack the Kremlin with 2 drones overnight in an effort to assassinate President Vladimir Putin. So Kremlin decreed the alleged attack attempt as a terrorist attack act and said that Russian military and the security forces, they disabled the drones before they could strike, and they did not elaborate further. So we are not seeing that this war is going to end sooner or later. And moving forward, so Go First Airlines, हमने कल देखा, they have filed for bankruptcy. So it lands in NCLT with around rupees 11,463 crore dues. So Go First, it has approached the National Company Law Tribunal, and it has sought the admission of its insolvency plea also. एंड उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा. हमने कल इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या प्रोसेस रहता है. आपके लिए जो टास्क है दैट इज टू फाइंड आउट अबाउट मोर डिटेल्स ऑफ आईबीसी, एनसीएलटी, एंड ये पता होना चाहिए कि एनसीएलटी किस तरह के केसेस के साथ डील करता है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. मतलब और थोड़ा डिटेल में अगर आप प्रोसेस को फाइंड आउट करोगे, सर्च करोगे, तो वो आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है. सो अप्रैल की अगर पीएमआई की बात करें तो इट सिग्नल्स की सर्विसेज सेक्टर इट हैड बेस्ट एक्सपेंशन इन 13 years. सो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अप्रैल के डेटा की हम बात कर रहे हैं, एंड सर्विसेज सेक्टर में वी नीड टू नो कि इंडिया इट एंजॉयज सरप्लस एज फार एज सर्विसेज ट्रेड इज कंसर्न्ड. सो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ज्यादा है कंपेयर टू द इम्पोर्ट
as far as services import is concerned in India. So we like enjoy a surplus in services trade. So getting down to the business, rising from 57.8 in March to 62 in April, seasonally adjusted S&P Global India Services Purchasers Managers Index Business Activity Index, it has signaled fastest expansion in output since June 2010. So that is, we are saying कि 13 years में we are seeing such a nice performance. So India's services sector recorded its highest uptick in new business and output levels since June 2010 this April, which was led by a strong upward turn in finance and insurance segment. So specifically talking about services में भी कौन से sector में हमने good expansion या massive expansion देखा है? So that is in finance and insurance segment. And इसके अलावा है we're talking about the PMI data, तो S&P Global India Services है जो इसको issue करते हैं, and reading above 50 on this index, it indicates कि there is expansion of business activity. And अगर 50 is the reading, तो उसका मतलब ये होता है कि basically मैं आपको बता रही हूँ कैसे figures को आप interpret करते हो. So अगर 50 है इंडेक्स की रीडिंग, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चेंज नहीं है बिजनेस एक्टिविटी लेवल्स में. बट अगर 50 से हायर लेवल पे है तो इट शोज कि बिजनेस एक्टिविटी दे आर ग्रोइंग, दे आर एक्सपैंडिंग. एंड अगर उससे कम है तो ऑब्वियसली इट वुड शो कि देयर इज डिक्लाइन इन द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. सो हमने देखा कि जो न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं दे ऑल्सो एक्सपैंडेड फॉर द थर्ड मंथ इन सक्सेशन. एंड उसका जो पेस की बात करें तो पेस वाज आल्सो वेरी फास्ट over this period. However, job creation that remained negligible in April, and जो input cost inflation था, which had hit a 2.5-year low in March, it's surged to 3-month high. So with firms, they're reporting a rise in the cost on food, fuel, medicine, transportation, and the wages. तो अगर हम मतलब ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं तो सर्विसेज सेक्टर में जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो डेफिनेटली एक्सपैंड हो रही हैं. जो हमने ऑर्डर्स देखे वो भी एक्सपैंड हुए और वो भी एक फास्टर पेस पे. बट कुछ चैलेंजेस हैं. तो जॉब क्रिएशन वो नेग्लिजिबल था, वहां पे हमने इतनी ज्यादा ग्रोथ या गुड परफॉर्मेंस नहीं देखी. एंड सेकेंडली वी आर सीइंग जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है दैट इज ऑल्सो राइजिंग. तो उसमें फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड वेजेस. So all this forms the part of the input cost for the business activities in the services sector. So यहाँ पे भी जब हम बात कर रहे हैं रेसलर्स के प्रोटेस्ट की, तो अगेन यहाँ पे सील्ड कवर का मेंशन किया गया है. तो वुमेन रेसलर्स दे सीक सुप्रीम कोर्ट नोट टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स इन सील्ड कवर. So consensual, sorry, the Council for the Women Wrestlers alleging sexual harassment against the Wrestling Federation of India's chief sought permission to file the documents in a sealed cover. Whereas अगर हम generally बात करें सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है as far as sealed cover jurisprudence is concerned, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि except in few cases, basically जहाँ पे exception है, it is okay to go ahead with the sealed cover jurisprudence. But generally normal cases में अगर आप ज्यादा से ज्यादा सील्ड कवर के ऊपर रिलाई करोगे, इंफॉर्मेशन यू विल बी प्रोवाइडिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन अ सील्ड कवर, तो वो ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाता है. तो जनरल व्यू सुप्रीम कोर्ट का यही है कि एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शंस आप ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा प्रमोट करो, अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा प्रमोट करो, रादर देन ऑफन रिलाइंग अपॉन द सील्ड कवर प्रोसेस.
So farmers, they are drying maize that got drenched in the continuous rains. It's near Vijayawada. तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में मैक्सिमम हमें प्रोडक्शन मिलता है ऑफ मेज, एंड मेज एज अ बाय प्रोडक्ट और किन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. सो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. Now coming to the editorial section, so it is talking about Karnataka election, so it's all political, will not take this up. Then ओके यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट. सो irrespective of what the US CIRF says, India must review its rights record. So for the fourth consecutive year, government has expressed outrage and rejected the recommendations of this US Commission on International Religious Freedoms. Latest report क्या बोल रही है? It is calling it biased and motivated. So यहाँ पे रिलीजन आ जाता है तो वैसे ही थिंग्स लाइक दे गेट चार्ज्ड अप. सो for the fourth consecutive year, we are like not accepting what this report is saying. So obviously it is published by USA and it is the Commission on International Religious Freedom. So usse regarding it is saying कि India में it is biased, government is biased and it is motivated. So in its report released recently, we saw कि independent congressional body has called for India to be designated a country of particular concern for its worsening record on the religious freedom. So that's what the government is saying. Obviously, they would not be accepting this and they're calling it to be biased. And report has targeted the Indian government for promoting and enforcing religiously discriminatory policies, like कुछ laws के names भी mention किए गए हैं, and that particularly deal with conversion, which are related to interfaith relationships, like wearing the hijab and cow slaughter, and as well as CEA and NRC का भी mention किया गया है. तो इस रिपोर्ट को completely deny करना वो भी एक acceptable चीज नहीं होगी, क्योंकि वो भी किसी ना किसी डेटा पे based होगी. उसके बाद ही आप इस conclusion पे आए हो that you're calling India to be biased and motivated, but again we can't 100% accept it also. So दोनों चीजें हैं. सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो रियल ग्राउंड सिचुएशन है, जो कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू रिलीजियस फ्रीडम, वी नीड टू एड्रेस ऑल ऑफ देम एंड वी नीड टू लाइक रिविजिट एंड रिव्यू थिंग्स अगर ये रिपोर्ट ये कुछ चीजें बोल रही हैं तो. So here it is saying कि guaranteed pension, it is not bad economics. So इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, but you know, having that general analysis, we'll just limit ourselves to that. So it is saying कि with multiple state governments, they are announcing the reversion back to the old pension scheme. ये हम देख रहे हैं, एक trend है. And some more which are speculating to do the same thing. So debate है कि pensions, it is जो भी pension से related debate है, that is hotting up. So most of the economists, उन्होंने basically उनका क्या reaction है to this thing कि most of the states, they are either planning, yeah, they have already shifted to this old pension scheme. So they have frowned upon this, arguing कि this is bad economics on at least two grounds. So most of the economists का मानना यही है कि अगर आप you are going back to this old pension system, तो this is a bad economics, and उन्होंने इसके लिए दो reasons भी दिए. तो first reason है, since the state it has to bear the full burden of the pensions, it will become fiscally unsustainable in the medium to the long run. पहला रीजन यही है, क्योंकि पूरा कंप्लीट बर्डन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है एंड ये बर्डन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा तो फिजिकली अनसस्टेनेबल हो जाएंगी चीजें. सेकेंड इज सच एन अनसस्टेनेबल राइज इन द पेंशन एलोकेशन इन द बजट कैन ओनली कम एट द कॉस्ट ऑफ other more pressing and important welfare expenditures allocated for the poor and the marginalized sections. So obviously पैसा अगर पेंशन में ज्यादा जाएगा
तो एक तो आपको पता होना चाहिए क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी का ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कैपिटल एसेट्स क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एफडीआई होती है, तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड हम ये चीज हमेशा बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमें ज्यादा फोकस करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करके रखना है टू द मिनिमम। बट ठीक है, जितना बनता है उतना रखो, बट ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे स्पेंड कर रहे हो। तो ऑब्वियसली सेकंड रीजन यही है कि पेंशन्स का बर्डन अगर इंक्रीज हो जाएगा ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो जो बाकी वेलफेयर मेजर्स हैं वहां से पैसा डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स पेंशन। तो जो ग्रोथ है, डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। सो दिस इज वी कैन से कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट का मानना यही है। एंड दो रीजंस उन्होंने जो दिए हैं, दीज आर देयर। बट बोथ दीज आर्ग्यूमेंट्स दे अज्यूम कि फिस्कल रेवेन्यूज जो गवर्नमेंट के हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, which need not be the case अगर गवर्नमेंट इट हैज इट्स प्रायोरिटीज राइट। सो ये बात भी सही है कि अभी जो हमने ऊपर दो रीजंस देखे उसमें एक अजम्पशन ये जरूर थी कि उन्होंने अज्यूम किया कि जो स्टेट के फिस्कल रेवेन्यूज हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस की बात नहीं गई। कम होने का तो कोई सवाल नहीं है, बट वो हो भी सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस भी इतने हैं। बट उसको साइड में रखते हुए अगर कम भी होगा तो बहुत मार्जिनल कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज एक्सपैंड ही कर रही है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स रिकवरी। सो दूसरा सिनेरियो ये है कि आने वाले टाइम में ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हो सके। तो उस केस में जैसे अभी हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट देखी कि पैसा शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स पेंशन थिंग, तो वो इम्पैक्ट कम हो सकता है। तो दिस इज सेइंग कि आने वाले टाइम में स्टेट गवर्नमेंट के फिस्कल रेवेन्यूज इंक्रीज हो सकते हैं अगर उनकी प्रायोरिटीज राइट हैं एंड वो राइट एरिया पे, राइट सेक्टर में फोकस कर रहे हैं। दे आर इंश्योरिंग, दे आर मॉनिटरिंग द स्टेप्स विच आर बीइंग टेकन, कोई डीले नहीं है, कॉस्ट ओवररन्स नहीं हो रही हैं, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उनके रेवेन्यू इंक्रीज भी हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ रैशनलाइजिंग दिस नेसेसरी एक्सपेंडिचर, government should rationalize taxes also and say like they can do it by implementing inheritance and wealth tax। वो implement कर सकते हैं, which are either like right now तो इंडिया में अगर हम बात करें wealth tax की, property tax की, inheritance tax की, तो they are almost negligible or they are non-existent in India। So इस area पे state governments they can work, and दिस इज वन स्टेप जब हम रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं एट द स्टेट फ्रंट। सो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड बाकी थोड़ा ज्यादा डिटेल में, सो हम इसको इतना ज्यादा नहीं असेस करेंगे, बट जो ब्रॉडर पिक्चर थी वी जस्ट हैड अ लुक एंड वी अंडरस्टूड दैट थिंग कि क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमिस्ट का मानना है जब पेंशन की बात कर रहे हैं, एंड आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। So Europe, it uses India and China to get the Russian oil despite the sanctions। इसके बारे में मैं पहले 2 बार बात कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले डायरेक्टली रशिया एंड यूरोप में ट्रेड होता था, बट बिकॉज ऑफ दिस वॉर इन यूक्रेन अब एक चैनल बन गया है विच इज गोइंग वाया इंडिया एंड चाइना। तो रशियन ऑयल डेफिनेटली यूरोप तक पहुंच रहा है, बट दैट इज हैपनिंग वाया इंडिया एंड चाइना। सो वी कैन से कि सैंक्शंस का कोई रियल इम्पैक्ट नहीं हुआ, जो इंटेंडेड इम्पैक्ट था, जिस इंटेंशन के साथ सैंक्शंस लेके आए थे द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इंडियाज क्रूड इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया पोस्ट दिस वॉर दे हैव सर्ज्ड बाय अराउंड 1350%। So this became the largest fuel exporter to Europe also. So India, we have become the largest fuel exporter to Europe। and यहाँ पे देख सकते हो किस रेट पे ग्रोथ हुई है जब हम बात करते हैं रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की इनटू इंडिया। सो यहाँ पे हमारे लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन या इंडिया के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस थिंग इज कि इंडिया में टॉप 4 या टॉप 5 क्रूड ऑयल कंपनी, क्रूड ऑयल कंट्रीज कौन सी है जो जहाँ से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव।
Now we have the European Union's Artificial Intelligence Act. So what are the stipulations which are mentioned in this new draft document, and why are artificial intelligence tools they're often called the black boxes? So ये टर्म आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक बॉक्सेस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के लिए भी यूज करते हैं. एंड व्हाट आर द 4 रिस्क कैटेगरीज जो बात की गई है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं. सो हाउ डिड दिस पॉपुलैरिटी ऑफ चैट जीपीटी इट एक्सेलरेट एंड change the process of bringing in the regulation for this artificial intelligence. So ये हमने जरूर देखा है कि जब से chat GPT it has gained popularization and ज्यादा से ज्यादा यूसेज लोगों की बढ़ गई है, हमने इतनी बात करी रिगार्डिंग द चैट जीपीटी, तो उसके बाद से रेगुलेशन की बातें भी आने लगी. एंड here if we go by this article and some details and we try to understand कि इस draft law में क्या provisions हैं, क्या चीजें mention की गई हैं. So let's try to understand that. And यहाँ पे हम ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस की भी बात करेंगे. सो पहले तो हम बात करते हैं कि एक्ट बना कैसे. सो लेजिस्लेशन ड्राफ्टेड इन 2021 with the aim of bringing transparency, trust and accountability to artificial intelligence and creating a framework to mitigate the risk to the safety, health and fundamental rights and the democratic values of European Union. So main objective यही था, so that थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी आ जाए, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो सके, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो सके जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, एंड जो रिस्क है उनको हम कंसर्न थोड़ा कम कर सके, सेफ्टी पे थोड़ा और वर्क कर सके, जो हेल्थ है एंड फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनको अबाइड करे, वो वॉयलेट ना हो when we are seeing the usage and dependence upon artificial intelligence. So it also aims to address even the ethical question. Definitely ये aspect हमेशा रहता है when we're talking about artificial intelligence कि ethical question को आप कैसे address करोगे. So it is also dealing with that. And then again implementation challenges in various sectors. So definitely when we are talking about implementation, different sectors में obviously artificial intelligence को different तरीके से use किया जाएगा, तो वहां पे क्या challenges हैं उनकी बात भी की गई है. So जैसे हमने बात करी है पहले भी 2018 जो 2018 में we had this European Union का General Data Protection Regulation. So this is also important and ये already prelims में आ चुका है. So basically similar to how this law made it an industry leader in the global data protection regime में, so similarly even in case of artificial intelligence law, even that is aiming to strengthen Europe's position as a global hub of excellence in artificial intelligence from the lab to the market and ensure कि artificial intelligence in Europe it respects 27 country blocks values and rules. So definitely आप उनको violate नहीं कर सकते हो. So जैसे कि यूरोपियन यूनियन का ये जो लॉ है GDPR, that emerged and that made Europe a leader जब हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं. तो similarly on this front they are making efforts as far as artificial intelligence is concerned. So draft document क्या बात करता है? So draft of this act it broadly firstly defines कि artificial intelligence है क्या. So it says it is a software that is developed with one or more of the techniques that can for a given set of human defined objectives generate the outputs like content, predictions आपको मिल सकती है, recommendations आपको देते हैं artificial intelligence like chat GPT अगर आपने use किया होगा तो within seconds it gives you what you are asking it, and decisions which can influence the environments and like they interact with. So ये कुछ आउटपुट है एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी मेंशन करता है. सो इट इज आल्सो डिफाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स क्या होते हैं based on machine learning and deep learning knowledge and as well as the logic based and statistical approaches. So act ka central approach is classification of artificial intelligence technology based on the level of risk they pose to
health and safety are fundamental rights of a person. So classify किया हुआ है artificial intelligence को on the basis of कितना risk level है. So 4 risk categories बनाई गई हैं, which is unacceptable, which is high risk, limited risk and minimal risk. And पहली थी unacceptable risk. So ये 4 risk categories बनाई गई हैं. Accordingly जो artificial intelligence technology है उनको in different categories में put किया गया है. So the act, it also prohibits using technologies in unacceptable risk category with little exception. So बहुत minor exception है, and जो भी technology, AI technology would fall under this category of unacceptable risk, तो वो completely prohibited है from usage, but एक little या minor exception जरूर है इस category के case में भी. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज की बात करी है. विल मूव फॉरवर्ड. सो इट इज लाइक फोकसिंग सब्सटैंशियली ऑन एआई इन हाई रिस्क कैटेगरी, prescribing a number of pre and post market requirements even for developers and users of such systems. So जो टेक्नोलॉजी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करेगी वहां पे इट इज टॉकिंग अबाउट उससे पहले का एंड उसके बाद का मार्केट रिक्वायरमेंट्स जब हम डेवलपर्स एंड यूजर्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. तो यहाँ पे अप्रूवल्स रहेंगे बिफोर इट्स यूजेज एंड इवन आफ्टर इट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट इज बीइंग यूज्ड. सो इस कैटेगरी में कुछ एग्जांपल्स जो हम बात करें इस टाइप की टेक्नोलॉजी के which fall under this category of high risk. So it includes biometric identification, categorization of natural persons, and AI का use in healthcare, education, employment, law enforcement, justice delivery systems, and the systems which are providing access to essential private and public services. So they fall under this category of high risk. एंड जब हमने अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी की बात करी तो यहाँ पे भी एक बार एग्जांपल्स देख सकते हैं. यहाँ पे इट इंक्लूड्स यूज ऑफ रियल टाइम फेशियल एंड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इन पब्लिक स्पेसेस. सो यहाँ उनके रियल टाइम यूजेज की बात की जा रही है. एंड सिस्टम्स ऑफ social scoring of citizens by governments leading to unjustified and disproportionate detrimental treatment, subliminal techniques to distort a person's behavior, and जो technologies which can exploit the vulnerabilities of young or elderly or persons with disabilities. So ये examples हो गए जो unacceptable risk category में fall करेंगे. So what is the recent proposal on the general purpose artificial intelligence like चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो इससे रिगार्डिंग क्या टेक है. So recently, February में this year, this general purpose AI such as the language model based chat GPT used for plethora of tasks from like summarizing the concepts on internet to serving up poems. आप मतलब कुछ भी डिमांड कर सकते हो in the form of text, वो आपको chat GPT प्रोवाइड कर सकता है. So यहाँ पे it is saying कि जो कोलंबियन कोर्ट जजमेंट थी did not feature in the European Union lawmakers plans for regulating AI technologies. So ठीक है, उनके स्पेसिफिक बात हो रही है. Lawmakers, they are now targeting the use of copyrighted material by the companies deploying these generative AI tools like ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी. सो यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है ना जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने पहले भी एम्फसाइज किया इस चीज के ऊपर. तो आप इसके बारे में थोड़ा फाइंड आउट करोगे कि ये किस टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, क्या इसकी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री एक क्रिएट हो चुकी है एंड हाउ दे आर रिएक्टिंग. So some industry players, they have welcomed this legislation. Others, they have warned कि broad and strict rules, they could stifle innovation. So अगर strictness increase की जाएगी, इतना ज़्यादा strict regulation होगा as per this law, तो they are saying कि innovation के ऊपर impact होगा, it would hinder या challenges आएंगे at this innovation front. But कुछ companies है, they are also supporting this legislation. So obviously दोनों तरीके की parties होती हैं. Companies, they have also raised concerns about transparency requirements, fearing that it could mean divulging the trade secrets. So obviously secretly you can't do anything.
एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी as far as this technology is concerned. So global AI governance currently क्या stand है उसका? So rapidly evolving pace of AI development, it has led to diverging global views on how to regulate these technologies. So since बहुत रैपिड पेस पे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, न्यू इनोवेशंस हमें देखने को मिल रही है, तो ग्लोबली जो व्यूज भी हैं वो भी बहुत डाइवर्जेंट हैं, क्योंकि जिन लोगों को फायदा हो रहा है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, वो बोलेंगे कि आप इसको इतना स्ट्रिक्टली रेगुलेट नहीं कर सकते, वो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट रहेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट रहेंगे। बट एक साइड ये चीज है, दूसरी साइड ऐसे लोग भी होंगे who would support regulation, who would support monitoring things, and जो एक एथिकल तरीके से एथिकल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो यूएस की बात करें तो करंटली इट डज नॉट हैव कोई भी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एआई रेगुलेशन के लिए लॉ, एंड इट हैज टेकन अ फेयरली हैंड्स ऑफ अप्रोच एज फार एज दिस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड। सो राइट नाउ जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव आल्सो रिलीज्ड अ ब्लूप्रिंट for an AI Bill of Rights, but developed by the White House Office of Science and Tech Policy. It outlines the harms of AI to economic and civil rights. Then it is also laying down 5 principles for mitigating these harms. But ऐसा कोई law नहीं है USA में regarding the regulation of AI. सो हॉरिजॉन्टल अप्रोच की जगह, जैसे यूरोपियन यूनियन वाले बिल में हमने देखा जो ड्राफ्ट है, जो यूएसए का ये पेपर रिलीज हुआ है, इट इंडोर्सेस अ सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच टू द एआई गवर्नेंस। सो यूएसए में सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो की जा रही है, दे फाइंड इट मच मोर सूटेबल। यूरोपियन यूनियन के केस में दिस प्रपोज्ड ड्राफ्ट बिल, इट इज like it is following the horizontal approach. So जहाँ पे अगर हम यूएसए की बात करें, पॉलिसी इंटरवेंशंस रहेंगे इंडिविजुअल सेक्टर्स के लिए, लाइक हेल्थ के लिए अलग रहेंगे, लेबर के लिए अलग होगा, एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग होगा। So it would be like leaving it to the sectoral federal agencies to come out with their plans as far as different sectors is concerned. So China की बात करें, which is on the other end of the spectrum, over the last year it came out with some of the world's first nationally binding regulations जो target कर रहा है specific types of algorithms and AI. So it has enacted a law also to regulate the recommendation algorithms with a focus on how they disseminate the information. So definitely China में इससे regarding law आ चुका है, जो बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिकमेंड करती है चीजें, लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे चैट जीपीटी उसका परफेक्ट एग्जांपल रहेगा। सो चाइना में जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना है, व्हिच ड्राफ्ट द रूल्स, दे हैव टोल्ड कंपनीज टू प्रमोट पॉजिटिव एनर्जी and to not endanger national security or the social public interest, and also to give an explanation जब वो कोई ऐसा harm create करते हैं to the legitimate interest of the users. So that is the global stand जब हम AI governance की बात करते हैं। बट यहाँ पे इंडिया का रोल, इंडिया में कैसे चीजें शेप हो रही है as far as AI is concerned, that is missing in this article, and we'll deal with it once we have comprehensive article regarding that. So press freedom index की बात करें तो we have slipped and now we are like ranked at 161 out of 180 nations. So हमारी rank, it has worsened compared to before. So ranking in 2023 World Press Freedom Index, it has slipped to 161, and that is according to the latest report released by the global media watchdog Reporters Without Borders. So it is this body जो World Press Freedom Index को release करते हैं, Reporters Without Borders, and इसके अलावा in comparison to Pakistan, it has fared better when it comes to media freedom, as it was placed at 150. So India से better position में पाकिस्तान है जब हम media freedom की बात करते हैं, and 2022 में India was ranked at 150. So we have slipped by 11 positions. So Sri Lanka, it has also made significant improvement on the index, and Sri Lanka ki rank, it is even better than that of Pakistan and India both. So it is ranked at 135 position. And Norway, Ireland, and Denmark, they have occupied the top 3 positions in this index.
Norway, Ireland, and Denmark. And Vietnam, China, and North Korea, they have constituted the bottom three. ठीक है, मतलब North Korea and China तो थोड़ा acceptable है, but वियतनाम भी bottom में है जब हम press freedom की बात करते हैं. So concerns they rise. इंडिया का जो वुमेन प्रेस कॉर्प्स है या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है एंड द प्रेस एसोसिएशन दे हैव रिलीज्ड अ जॉइंट स्टेटमेंट voicing their concern over the country's dip in this index. And indices of the press freedom, they have worsened in several countries like India, according to this report, and the constraints on the press freedom due to hostile working conditions like contractization कर दिया गया है ज़्यादा, they have also been challenged. And insecure working conditions हैं, they can never contribute to a free press. So the Kerala story is regarding एक पूरा debate चल रहा है. Supreme Court tells the petitioners to approach High Court for disclaimer. So Supreme Court ने बोला कि first you need to go to the High Court, and there was a petition by this Jamiat Ulma-e-Hind to direct the makers of this movie to carry a disclaimer that it is a work of fiction. So that is their demand, and Supreme Court ने बोला कि you need to approach High Court. So this would be possibly under Article 226 writ petition की जो बात करता है. And there are like seasoned judges in the High Court. Why don't you go there? This is what Supreme Court is saying to them. And why should we become a super 226 court? So basically पहले power High Court की है, तो आप approach कीजिए High Court को. So our external affairs minister is going to hold talks with Chinese and the Russian ministers today. So he will also host the Pakistan foreign minister, but on where a one-on-one meet, it is unlikely with him. Bilateral meetings rahengi, events ahead of the SEO foreign ministers meet. It could see some awkward moments given, which are the strains between many of the member countries. So obviously, because of Russia-Ukraine war, things are a little challenging today's times. So SEO meet हो रहा है गोवा में. SEO members पता होना चाहिए. It's headquarters, जो basic fact है, मैं everyday repeat करती हूँ इन चीज़ों को. And हमारे लिए important रहेगा कि क्या outcome होने वाला है. So we'll focus more on that. So the defense minister lays down the foundation stone for the Coast Guard harbor in Maldives. And here is a picture as well. So they've laid down the foundation stone for the Maldives National Defense Forces Coast Guard, which is called Ekatha Harbor. So the development and the repair facility, it is one of the biggest grant in aid projects of India there. So both the parties, they have reaffirmed the importance of maintaining peace, stability, security in the region, and they also recognized the need to work together to address the common security challenges. They underscored the importance of respecting the international law and rules-based international order. So all these are keywords, please mind them and note them down at one place. And they also express their commitment to upholding these principles. So a cyclone may be building up in the next week in Bay of Bengal, as per the IMD forecast. So for a cyclone to form this year, it will be called Mocha. So a weather agency says that various models suggest that cyclone, it could be formed by 9th of May and it may grow to a severe cyclonic storm. So आपको पता होना चाहिए जो different categories of storms है, किस basis पे we have categorized them, and वो पता होना चाहिए यहाँ पे mentioned है cyclonic storm. Speed is mentioned. Strongest super cyclonic storm कब categorize करते हैं जब speed is more than
222 kilometers per hour, and severe cyclonic storm may, this is the speed, it is just one step above cyclonic storm. तो cyclonic storm से ज़्यादा stronger रहता है severe cyclonic storm. इसके बाद we have the super cyclonic storm. And then आपको clarity होनी चाहिए regarding even the naming of the cyclones की name आप कैसे decide करते हो? Now coming to the world page. So US pick Ajay Banga is confirmed as the next president of World Bank. So he's been confirmed and was selected as its next president. So he'll be taking charge at a pivotal time for the development lender as it looks to better address the climate change. So bank's board voted to approve his leadership for a 5-year term, and he will take over the role from David Malpass on 2nd of June. Coming to the most important news of the day, US Fed Reserve raises the rates by another 25 basis points. And again, at the same time, it is hinting कि ये last such step होने वाला है जब हम tight monetary policy की बात करते हैं. But अच्छी बात ये है कि it might be the last one. So let's see कि आगे क्या होगा. But अभी के लिए, again, the policy rate, it has been hiked by another 0.25%. So they have raised this interest rate, and it may pause further increases in the coming times. So giving officials time to assess the bank failures, how the Washington standoff over the US debt ceiling plays out, and the course of inflation क्या रहेगा. And हमने कल देखा था कि एक और US बैंक फेल हुआ है. So things are not good. And एक और आर्टिकल था कल जिसमें बोल रहा था, it was saying कि I guess by June 1 USA में जो basically liquidity की बात की जा रही थी, तो it was saying कि it is possible कि by June 1 USA might be out of cash. तो you can imagine कि अगर ये चीजें बोली जा रही हैं, that was from Janet Yellen. So you can imagine what is the real economic situation ground पे क्या reality है, and still tight monetary policy के चलते हुए policy rate को increase किया गया है. So UN denounces Taliban's intimidation and जो भी journalists पे attack किए जा रहे हैं in Afghanistan. So these are unacceptable, and UN has expressed concern for the future of country's media there. And even like during their previous rule, जो कि 1990s की हम बात कर रहे हैं, तब भी तालिबान regime था, तो उस point of time पे भी उन्होंने बहुत सारे television, radio channels, newspapers को ban कर दिया था country में. But abhi, like journalists, they are still working, but they are forced to navigate unclear and often arbitrary boundaries of reporting against an ever-present threat of repression and closure. So मतलब कभी भी order आ सकते हैं, they can close down any particular news channel. कोई नई बात नहीं है. And एक like continued threat है when we talk about press freedom. And why not, like why only press freedom? Even women freedom, उनकी rights, वहाँ पे भी same situation है when we talk about their freedom and rights and liberty. Now taking up the business page here, adapting to climate change is going to cost India around rupees 85.6 lakh crores by 2030. So climate financing में जो gap exist करता है वो बहुत बड़ा challenge है. So RBI's Department of Economic and Policy Research, they see the need to cut energy intensity of GDP by 5% annually अगर हमें achieve करना है this target of net zero by 2070. And green financing की जो requirement की बात की गई है वो estimate किया गया है to be at least 2.5% of the GDP a year
to address infrastructure gap. तो infrastructure gap को एड्रेस करने के लिए वी नीड दिस मच ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, बट उसको भी आप कैसे एड्रेस करोगे जब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में ही गैप एग्जिस्ट करता है. सो यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई हैं जिससे वी कैन लाइक सब्सटैंशिएट मोर इन आवर आंसर्स, सो वी कैन नोट इट डाउन. सो जो क्वालिटी कंट्रोल का मेजर है या स्टेप है, इट इज नॉट एम्ड एट स्टॉपिंग द इम्पोर्ट्स. सो दिस इज व्हाट the Consumer Affairs and Food Minister says, and quality control orders on several products and services in alignment with the world standards. That is important. So he said कि जो quality control orders हैं, they would help India have the same quality products which are used worldwide, and hence importers abroad would have the confidence in the Indian goods also. So we can't compromise with quality. So WTO की बात करें तो it needs to look at the farm subsidy issue with open mind. So this is the issue जब हम इंडिया की बात करते हैं WTO में क्या इशू चल रहा है. तो जो फार्म सब्सिडी से रिगार्डिंग इशू है, कुछ उस पर लिमिट इम्पोज की गई है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए अलग है. तो आर फाइनेंस मिनिस्टर सेज कि WTO को इस चीज को थोड़े और ओपन एंड ब्रॉड माइंड से देखने की जरूरत है. So it should look at this issue of farm subsidies with an open mind as it impacts food security needs of emerging economies, and that too in the backdrop of COVID-19 and this Russia-Ukraine war. So this is very clear क्योंकि farm subsidies definitely we are trying to ensure कि food security पे कोई compromise या आने वाले time में ये कोई challenge ना बन जाए हमारे लिए. And obviously direct impact farm subsidies का food security के ऊपर होता है. And at ऐसे point of time में जहाँ हम अभी सिर्फ COVID-19 से उबर रहे हैं, जो उसके impact रहे उससे उबर रहे हैं, and Russia-Ukraine war एक दूसरा challenge है. So Asian Development Bank का सेमिनार चल रहा है in South Korea. So there she was speaking and she said कि policies to support Asia's rebound. This was the topic on which she was speaking. She said कि sooner a solution is found out by the WTO, the better it would be for the world and not just specifically to India. So since WTO it was founded, there has been a grievance with respect to the export of agricultural products and generally in trade, the voice of global south and emerging markets, it has not been heard at par with that of the developed countries. So ये एक पूरा issue है, and global south largely when we are talking about, yeah, when we say global south, so it refers to the countries which are in southern hemisphere, yeah, countries which are part of Asia, Africa, and South America. So we will all have to talk again about food and fertilizer security at the WTO with an open mind. So that's the message from India. Now moving on to the Mint newspaper. So the first topic is regarding Go First Airlines. कैसे fail हुई? What went wrong? What is the reason behind its failure? So tight spot, having a look at this data when we see, so Go First, it claims a setback of around rupees 10,800 crores because 30 to 50% जो उसकी fleet है, it has been grounded since 2020 due to continuing technical issues with the Pratt and Whitney engines. So इसकी वजह से जो उनकी 30 to 50% of the fleet थी, it has been grounded since 2020 क्योंकि जो उनकी Pratt and Whitney engines वो यूज कर रहे हैं in the airplanes, वहां पे टेक्निकल इश्यूज उनको बहुत ज्यादा फेस करने को मिले हैं. So अगर we go by the numbers, so there are around 54 total number of aircraft जो उनकी fleet में हैं. 49 is the number which are powered by Pratt and Whitney engines, except like 5 हैं जो बाकी दूसरे engine यूज करते हैं. 5 हैं which are powered by the CFM engines. So but majority जो है that is with Pratt and Whitney. So monthly flight departures of the Go First का हमें data दे रखा है. 2019 में fleet size 47 था, तो blue color में आप देख सकते हो कि monthly flight departures का क्या trend रहा है. And then 2022 में you can see how the trend has been. So
मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट जस्ट डिक्लाइंड एंड डिक्लाइन और थोड़ा स्टैग्नेट हो गया. So it is one of the oldest private airlines in India, and it has decided to file for bankruptcy. So let's delve into other aspects and try to understand this thing with much more clarity. So here, go first. It claims this we've seen. Pratt and Whitney engines are the main reason. June ki majority of the flight it has been grounded since 2020. So that is because of the technical reasons. So issue क्या है with the engines? I think इसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. So Pratt and Whitney का क्या response रहा है? So it said कि it's complying with March 2023 arbitration ruling and it will not comment further as this is now in litigation. So उन्होंने बोला है it is committed to the success of its airline customers and it continues to prioritize delivery schedules for all the customers. So they claim that Go First, it has a lengthy history of missing its financial obligations to Pratt and Whitney. So Pratt and Whitney का response towards this is कि financial जो obligations हैं वो उन्होंने timely oblige नहीं किया है. So this is their allegation. So क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ स्पेसिफिकली गो फर्स्ट एयरलाइंस के साथ है या और किसी में भी हमें देखने को मिला है? दिस इज इम्पोर्टेंट. सो ऐसा नहीं है. So that's good कि ऐसा नहीं है. It is only like it is not specific to Go First. Okay, in India में Pratt and Whitney it also supply engines for A320 aircraft to India's largest airline, that is Indigo. So वो Indigo को भी मतलब engine supply करते हैं. So there are like some 30 Indigo aircrafts. They have also been grounded for months because of engine issues only. So globally जो limited availability है replacement engines की एक वो challenge भी है. आपके पास कोई और अच्छा safe alternative nahi hai. And there is again shortage of repair slots from Pratt and Whitney. That has also troubled the business plans of the Turkish Airlines also. And they are concerned about the lack of serviceable engines leading to grounded fleet ahead of the peak summer tourist season. So it's going to be a challenging time for the aviation industry. So Go First flights ke liye ab what is going to be the plan ahead? So they have announced suspension of the flights from 3 to 5 May, and it is expected to extend this cancellation by another 2 weeks. Airline ने बोला है कि it will wait for the resolution professional to be appointed by the NCLT to decide its future course. So they're waiting for that, and Directorate General of Civil Aviation उन्होंने भी issue किया है Ashoka's notice to them for inconveniencing the passengers, and most travel agents they have stopped booking the tickets on their airline. So problem थोड़ी बड़ी है. It is not just specific to Go First. So let's see how it would be dealt with. So exports of electronic goods, they've started in financial year 2023. So exports of electronic goods, it have stolen the march on other traditional commodities in the country's export basket in previous financial. And electronic goods exports, they have clocked around $25.3 billion, rising a stunning 49% since 2021-22. So एक साल में the growth rate was 49%. So that's like really great and really massive. So that was the case, and the category alone contributed around 30% of the total growth in exports. So sirf 30% is coming from the electronic goods exports. So financial year 2019 से अगर हम compare करें growth, so it was around 152%. So that's really strong growth, which we are seeing in electronic goods exports. But still we have a long way to catch up with other large electronics exporters. So agar baki countries se compare kare to still like there's a lot of scope and a lot of things are there which
there's still like needs to be done. So exports account for only about 24% of India's total electronics trade, and sector runs the largest trade deficit among the major export categories. So सबसे larger trade deficit इसी कैटेगरी में है जब हम बात करें मेजर एक्सपोर्ट कैटेगरीज से कंपैरिजन करें तो, बट जो ग्रोथ है दैट इज पॉजिटिव, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट को भी कम करने में हेल्प करेगी. So this article we've already seen. So now we'll move to Financial Express. So let's see Vadia's. It may offer one-time settlement and NCLT to take up the insolvency plea today. So Vadia Group has always tried to see key airline operations they go on, and there's no question of Vadia Group having any intention to exit or move out. So Indian government is very keen that we should not fail. So this is coming from the CEO of Go First, and as airline, it has not defaulted, no bar on offering the revival plan. And obviously इस न्यूज़ का इम्पैक्ट शेयर प्राइसेस पे भी हुआ है. And since गोफर्स में फ्लाइट्स बंद कर दी हैं for 3 to 4 days, तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स के प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि जितने कम सप्लायर्स होंगे उतनी ज़्यादा उनके पास मोनोपोली पावर आई शुड से, उतनी ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की पावर रहेगी, क्योंकि फिर consumers would be having limited options, limited alternative options, I should say. सर्विसेज आउटपुट ग्रोथ की बात कर चुके हैं, 13-year हाई पे है, इसको अच्छे से हमने देख लिया है. यहाँ पे भी ऑल्सो हैविंग द ग्राफ सर्विसेज का एंड मैन्युफैक्चरिंग PMI का. तो सर्विसेज में यू कैन सी हाउ शार्पली इट हैज इंक्रीज्ड. तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग फार्म सब्सिडीज एंड WTO. सो WTO से जो बाकी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और क्या अग्रीमेंट्स हैं एंड और क्या बाकी पहले के टाइम में इश्यूज रहे हैं, अभी और क्या इश्यूज चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू WTO एंड इंडिया. सो द रिच वर्ल्ड्स एस्टिमेट ऑफ इंडियाज फार्म सपोर्ट दैट इज faulty as per the experts. And even जो WTO से related challenges हैं, like specifically related to their working, या जो उनका dispute settlement mechanism है, वहाँ पे भी हमें challenges देखने को मिल रहे हैं. So you can find out more about that. So maize production के लिए center it is planning incentives, and sugar output it like decline impacts the ethanol blending also. So sugar output decline हुआ है, उसकी वजह से ethanol blending के लिए जो plan है, जो target levels है, उसके ऊपर भी impact होगा. So sugar diverted for the ethanol production को अगर हम देखें तो you can see कि trend it has been obviously increasing. एंड ये लास्ट के दो हैं, दे आर प्रोजेक्शंस. सो ये रियल एस्टिमेट्स मतलब रियल फिगर्स नहीं है, दीज आर जस्ट प्रोजेक्शंस फॉर द फ्यूचर. सो 2021-22 तक अगर आप देखोगे 2018-19 से इट हैज स्टेडली इंक्रीज्ड जितना अमाउंट ऑफ शुगर इट इज डाइवर्टेड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. सो इट्स इन मिलियन टन्स एंड देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज. तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो टारगेट है दैट इज सेट एज 3% हायर रेट पे, डिस्पाइट जो मॉनसून वाले फ्रंट पे वी आर सीइंग कुछ कंसर्न्स हैं कि इफ वी आर हैविंग एल नीनो दिस ईयर देन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है एंड फूड इन्फ्लेशन इट माइट गो अप. बट उसके बाद भी जो फूड ग्रेन्स का टारगेट है वो 3% हायर लेवल पर डिसाइड किया गया है. सो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का ट्रेंड यहाँ पे दे रखा है. ऐसी ट्रेंड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं ऑब्वियसली हमेशा हर बारी आपको ट्रेंड बताने की कोशिश करती हूँ.
क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में हमेशा ग्राफ्स दे रखे होते हैं, डेटा होता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड. सो फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2019-20 से टिल 2022-23 तक हम देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए इट इज अ प्रोडक्ट लाइक टारगेट ईयर मतलब टारगेट लेवल्स दे रखे हैं. तो लास्ट 4 सालों में अगर हम देखें तो स्टेडी इंक्रीज हुआ है, बोल सकते हैं स्टेडीली इंक्रीज हुआ है फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया. सो हम यहाँ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. एंड आने वाले साल में भी जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें भी टारगेट इज 332 मिलियन टन्स. सो 297.5, उसके बाद 310 हुआ, फिर 315 हुआ, एंड देन नाउ वी वर एट 323.5 मिलियन टन्स. So now we'll take up Indian Express. So यहाँ पे देखते हैं what is missing जो हमने छोड़ दिया. So not just wrestling, but half of the national sports federations, they don't have sexual harassment panel as per the law. So जो law भी है उसको भी effectively implement abide नहीं किया जा रहा है. And we see कि there is surge in women in the sports, but 16 of the 30 federations जो हैं sports federations की बात हो रही है, they don't comply with the sexual harassment law. There is no internal complaints committee जो उन्होंने बनाई है, and there is absence of even external members. So that's missing. So we have this Act of Prevention of Sexual Harassment Act, जिसको हम पोस्ट भी बोलते हैं. It was there in 2013 में इसको लेके आए, and जो इसके अंदर norms हैं वो ही नहीं follow किए जा रहे हैं. And the protest continues. And अगर आप लोगों ने कल न्यूज़ देखी होगी रात को क्या इंसिडेंट्स हुआ, क्या वायलेंस हुई with the protesters. So highly unacceptable. And जो उनकी डिमांड्स है एटलीस्ट प्रॉपरली आप इन्वेस्टिगेट तो करो, उसके बाद आप रियलिटी पे आना, कंक्लूजन पे आना. बट स्टिल जो उनकी डिमांड है दैट गोज अनहर्ड, एंड डिफरेंट पॉलिटिशियंस दे आर विजिटिंग देम, बट लेट्स सी रियल जस्टिस कब की जाएगी. So facing flack over the NREG's rule changes, government holds talks on its initiatives. So what's on the table? 10 agenda listed by the Center for Discussion at the meeting, according to sources hai. Geo MG Narega. So that would be geotagging of the assets, then a DBT, NEFMS, that is transfer of funds directly to beneficiary account. इससे regarding discussion होगा. NMMS एक real time online attendance कैप्चरिंग ऐप है, इसमें भी प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं. देन एरिया ऑफिसर ऐप है एक. देन वी हैव ABPS जो है टू अवॉइड द रिजेक्शन ड्यू टू चेंज इन द अकाउंट और टू लाइक डी डुप्लीकेशन. 7 रजिस्टर्स हैं. CIB सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड से रिगार्डिंग होगा. वर्क फाइल. जैम, what is this Jam Narega, which is an app for feedback. And then we have GIS based GP planning. So MG Narega से regarding ये different चीजें हैं जिनके ऊपर basically it has been planned कि there would be talks, and the bone of contention is कि government it says कि changes they were brought in this app जो attendance record करेगी, and Aadhaar based payment system for the wage disbursement to check corruption ना हो, transparency बनी रहे. And जो critics थे they are calling it unfeasible.
पुअर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी हिंटरलैंड्स में, फार फ्लंग एरियाज में, रिमोट एरियाज में एक चैलेंज है, डिजिटल इलिटरेसी है, एंड बिसाइड्स देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इवन एक्सेस टू स्मार्टफोन्स ऑल्सो. सो आप कैसे लाइक अटेंडेंस को कैसे रिकॉर्ड करने वाले हो, उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वेजेस डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में भेजोगे, तो जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इवन टेक्निकल की भी बात करें, दे डोंट नो कि फोन पे मैसेज आ रहा है, कैसे उसको खोलना है, पढ़ना है, ये बेसिक भी नहीं पता है, एंड स्मार्टफोन्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वो चैलेंज है. फार फ्लंग एरियाज की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट रिमोट एरियाज में बहुत स्लो स्पीड है, या कई जगह तो बिल्कुल ही नहीं फंक्शन करता है. So that makes it difficult for the rural workers getting jobs under NEREX. So ये आने वाले टाइम में चेंजेस हैं, एंड कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस की जा रही है अंडर दिस एमजी नरेगा स्कीम. सो लेट्स सी हाउ डिस्कशन गोज एंड क्या आउटकम रहेगा. Coming to the explained page, so here the crisis at go first proper explain किया गया है, ये हम वैसे देख चुके हैं in the mid newspaper. And let's see आगे कैसे चीजें they would be dealt with, that would be important. And I'm not taking this article क्योंकि properly detail में I have explained you क्या रीजन है एंड क्या इसका इम्पैक्ट बाकी एयरलाइंस पे भी है, क्या ये सेम प्रॉब्लम बाकी एयरलाइंस भी फेस कर रहे हैं, यस दे आर फेसिंग. कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वो भी देखिए आने वाले टाइम में अब कैसे चीजें सॉल्व होंगी, एंड आईबीसी से रिलेटेड भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है. देन दिस central counterparties, why European Union it has acted against them. ये हम वैसे 2 दिन से इस चीज को भी डिस्कस कर रहे हैं, बट यूरोपियन यूनियन जो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है, they have de-recognized 6 of the India's clearing corporations and settlement intermediaries क्योंकि there is no cooperation arrangements with regulators in India. Like RBI के साथ they are not having a लाइक कोई ऐसा कॉपरेशन या टॉक्स बिटवीन यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर एंड इंडियाज रेगुलेटर. तो उन्होंने डिसीजन लिया है, यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी का कहना ये है कि आप हमें जो इंडिया की क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं जो यूरोपियन यूनियन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनका आप उनके ऊपर हमें सुपरवाइजरी पावर्स दे दो. तो ऑब्वियसली आप इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की सुपरवाइजरी पावर किसी फॉरेन एंटिटी को क्यों दोगे या कैसे दोगे, उससे ऑब्वियसली बहुत सारे कंसर्न्स भी है. नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स हो जाएंगे एंड सेफ्टी ऑफ डेटा से रिलेटेड कंसर्न्स हो जाएंगे, तो वो सब चीजें हैं. एंड कंप्लीटली एंड वेरी क्लियरली आरबीआई ने इस चीज को डिनाई किया है कि वी विल नॉट गिव देम दिस सुपरवाइजरी पावर ओवर इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस. सो जो ये अभी डी रिकग्निशन किया गया है बाय यूरोपियन यूनियन, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है. तो उन्होंने बोला है कि they will like no longer they will be able to provide the services to clearing members and trading venues in European Union. Obviously अब वो अपनी services नहीं provide कर पाएंगे in European Union. And जो European banks are which are dealing in the domestic forex, forward swap and equities and commodities markets, so basically they will also be impacted, and these lenders they will now have to set aside additional capital to trade in the domestic market. तो उसके लिए उनको additional capital set aside करना important हो जाएगा. Clearing members they will also be impacted by of higher capital requirements. So ये सारी conditions है जो उनको fulfill करनी पड़ेगी if they want to provide the services. And increased margin requirements रहेंगी, enhanced credit risk, lack of multilateral netting benefit. So ये सब additional बोल सकते हैं कि cost हो जाएंगी या फिर additional compliances है that they need to follow if they want to continue with their operations there. So almost 20% of जो FPI है which are registered in India, they are from Europe, and यहाँ पे भी इस चीज के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है, एफपीआई इनफ्लो कमिंग फ्रॉम यूरोप. एंड सेबी ने बोला है कि डी रिकग्निशन इट इज अनलाइकली टू हैव एनी इम्पैक्ट. सो एज पर सेबी ऐसा कोई मेजर या बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, एंड दैट्स देयर. सो उनका कहना ये भी है कि प्लान बी इज ऑल्सो देयर इन प्लेस, सो देयर इज नो नीड टू वरी. एंड वी वर्कड विद द मार्केट प्लेयर्स, द बिग वंस who would be impacted. So our regulation that is in place for action
plan B, and we do not expect any disruption in the market even if an agreement fails to be reached. So कोई ऐसा disruption या ऐसा कोई challenge देखने को नहीं मिलेगा. So Hollywood में जो film and TV writers हैं, they are on strike. So writers strike पे हैं. So let's understand थोड़ा सा, we'll just see कि basic क्या चल रहा है and not go into the much details of it. So thousands of Hollywood film and television writers, they have gone on strike from Tuesday, claiming that they are not being paid fairly in this streaming era. So वहाँ पे भी payment options, payment से regarding is the concern. जो minimum wage की बात कर लो या जो भी है, that is the concern. So action which will disrupt the television production, obviously. Then जो बाकी लोग dependent हैं, the writers, तो obviously बहुत important component है of the industry. So सारी चीजें फिर subsequently जो impact रहेगा वो it would be there. So जो उनकी income है that has been hit, and they are demanding कि जो मतलब legitimate है, जो rational income बनती है, at least उनको वो मिलनी चाहिए. So यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पिक्चर में भी, it is saying कि stop trying to make freelance happen even in this industry. So freelance से related obviously जब wage payment की बात आती है, जो payment की भी बात आती है, वो उससे regarding, उससे regulation से regarding, या अगर आप freelancer declare कर दिए जाते हो, freelancer या platform worker हो, तो बेसिकली आपके पास राइट्स आज के टाइम में नहीं है. जब हम इंडिया की बात करें, वहां का रूल क्या है किस कंट्री का, दैट इज डिफरेंट एंड दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न. बट इंडिया के केस में हम बात कर चुके हैं, एंड इंडिया में भी जो ब्लिंकिट के वर्कर्स या डिलीवरी बॉयज हैं, दे हैव बीन ऑन स्ट्राइक. सेम रीजन यही है, जो उनको इंसेंटिव था 35 रुपीज पर ऑर्डर, उसको रिड्यूस कर दिया है ₹15 पर ऑर्डर. तो अगेन वेज इश्यूज हैं, दैट इज द मेन थिंग. So as chair of Sci 20, India's CAG, it aims to help create a framework for G20 nations to ensure intergenerational equity and mitigate the climate change with, while we are developing the marine resources. So mitigating climate change के जो impact, अब हम marine resources की बात कर रहे हैं, तो sea level rise एक बहुत बड़ा challenge है. उससे रिगार्डिंग हमने कम्प्लीटली एक प्रॉपर एनालिसिस किया है. इसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है इंटरजेनरेशनल इक्विटी. तो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे अगर हम आज एक्शन या आज स्टेप्स नहीं लेते हैं तो. So under the Indian presidency, G20 leaders, they will address the urgent policy needs for the collective progress, equity, and inclusive growth when they meet in New Delhi. So summit theme is One Earth, One Family, One Future. So India has set the tone and perspective for the commitment to green development, circular economy, and lifestyle behavior changes as an actionable plan for achieving the 2030 SDGs. So these are the keywords: green development, circular economy, आपको पता होना चाहिए, what do we mean by it, lifestyle behavior changes. So that's there. And आपको ये पता होना चाहिए one earth, one family, one future या वसुदेव कुटुंबकम हम जो बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, कौन से टेक्स्ट में आपको ये मिलता है. So when we say कि Sci 20 का will be the chair, so CAG India, it will chair Sci 20. Sci is basically the supreme audit institutions. So the engagement group for the supreme audit institutions of G20 countries in Goa, they'll be meeting and CAG would chair it. So two priority areas they have been selected for the deliberations. पहला है blue economy and then we have responsible artificial intelligence. So आज हमने artificial intelligence जो यूरोपियन यूनियन लॉ आने वाला है उसके ड्राफ्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है. So यहाँ पे भी एजेंडा पे responsible AI है. So responsible AI में
जो एथिक्स वाला एलिमेंट है वो आ जाता है। सो एज अ पब्लिक ऑडिट अथॉरिटी अगर हम कैग की बात करें तो डेफिनेटली इट वैल्यूज इंडिपेंडेंस, accountability and transparency. So these are the ideals that shall remain the hallmark of even SAI 20. So our institution is a constitutional authority with wide responsibilities to strengthen democracy and the governance. We have been steadfast in our commitment to improving audits performance को improve करना with time, compliance को improve करना that it is on time concerning the state finances, local governance की बात करें, environmental auditing की बात करें. So that has been our target and that's what we are fighting for, or we are like taking steps to ensure that. Last year CAG ने release किया था first ever countrywide compendium of asset accounts of natural resources, which was prepared in line with the UN system of environmental and economic accounts. तो इसके बारे में आप थोड़ा और फाइंड आउट कर सकते हो, कंपेंडियम ऑफ एसेट अकाउंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो नेचुरल रिसोर्सेज है, इट माइट बी द थिंग कि अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ तो आप सोचोगे कि यहाँ पे कैग का क्या रोल आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जा रही है, बट ऐसा नहीं है. सो यू कैन नोट दिस फैक्ट डाउन. So coming to the world page here, we are seeing so UN top prize for 3 Iranian women journalists who reported the protest. So World Press Freedom Day पे these prizes they are announced, and United Nations they have announced these awards, and it will like जो इनका premier prize for press freedom है, it has been awarded to 3 imprisoned Iranian female journalists for their commitment to truth and accountability. So they are right now in prisons, but the award goes to them because जो उनकी commitment थी for truth and accountability उसको देखते हुए they have been given this award. So एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस न्यूज को ब्रोक आउट किया जो थी रिगार्डिंग 22 ईयर ओल्ड महसा अमीनी, जिससे रिगार्डिंग बहुत प्रोटेस्ट हुआ ईरान में. एंड उसके अलावा थर्ड विनर, ओके सेकंड विनर की कहाँ बात की गई है, वेल बीइंग. So there is this another winner who has worked for many years as a journalist, and it is one of the Iran's most prominent activist हैं. तो like तीनों ईरान से ही हैं, तो they have been given this award. So UN Educational, Scientific and Cultural Organization World Press Freedom Prize. So UNESCO है जो ये प्राइज देते हैं. It is named for these 3 journalists. So एक journalist है कोलंबिया की who was assassinated in front of the offices of his newspapers, of the newspaper. So ये award it is to coincide with the World Press Freedom Day जो 3rd May को every year celebrate किया जाता है since 1997. सेकेंड सच इंसिडेंस जब ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को सीज कर लिया है, एंड दैट्स अगेन इन द गल्फ वाटर्स, एंड दिस इज द न्यूज जो यूएसए बोल रहा है. सो ईरान प्रेसिडेंट इन सीरिया फॉर द फर्स्ट विजिट सिंस 2011. तो Iranian president he is on a visit to Syria. So यहाँ पे भी we are seeing tensions they are building up. एंड मार्शल आइलैंड्स कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए. बंदर अब्बास ये कहाँ लोकेटेड है, आप इन सब की लोकेशन मैप पे स्पॉट करेंगे. सो फाइनली कमिंग टू द इकोनॉमी पेज, इट ऊपर जो तीनों आर्टिकल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सो इट्स अ रिपीट. सो इंडिया के पाम ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो दे फॉल टू 14 मंथ लो इन अप्रैल.
So sunflower oil, it has been substituted with palm oil as it was available at the same price, या फिर discounted price पे it was available. So that was the reason कि palm oil imports India में कम हुए हैं by 30%. And here we're talking about the month of April and comparing it with year earlier period. So it is declined by 30%. Say the dealers, they're saying ki it will also likely make it difficult for the top producer Indonesia to increase the exports. So top exporter या top producer of palm oil is Indonesia. So उनके लिए अब ये challenge हो जाएगा कि वो कैसे palm oil के exports को increase करें. So buyers, they have now shifted to the substitutes sunflower oil. So यहाँ पे economy के concept भी आ जाता है, substitute goods कौन से होते हैं, complementary goods कौन से होते हैं. So that's important for you to know. And sunflower oil, it was trading at a premium of as high as $500 per ton in 2022. So Indian buyers, they have opted to switch to the rival soft oils for May. And sun oil imports in April वो increase हुए हैं 69% from a month ago to 250,000 tons. So as per RBI report, CBDC is more environment friendly than other cashless modes. So CBDC is the central bank's digital currency, और जिसको हम e-rupee भी बोलते हैं. So if designed keeping in mind with the environment, social and governance perspective and the objectives, it can become like more environment friendly compared to जो बाकी alternative cashless methods हैं. So एक ये एडवांटेज भी है CBDC. इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आप सर्च कर सकते हो क्योंकि ये पहले रिपीट हो चुकी हैं चीजें. सो पायलट फेज ऑफ CBDC और जो डिजिटल करेंसी हम बोले, बोथ होलसेल के लिए, रिटेल यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया था in 2022 by RBI. So pilot phases अभी चल रहे हैं. And payment affected through CBDC, they would be instantaneous. Not affected. जो भी payments की जाएंगी through CBDC या using the e-rupee, instant payment आप कर सकते हो and they would be final. And reduced reliance रहेगा on the clearing corporations. So उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उनका रोल बेसिकली कम हो जाएगा या उनकी ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी. एंड अदर सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर could cut down the energy consumption also. So this was a report by RBI on currency and finance 2022-23. So they are more energy efficient अगर हम keyword की बात करें than the current credit card processing centers. Because जो credit card processing centers हैं, they involve energy inefficient legacy systems. So focus on investment infrastructure for sustainable growth. So finance minister, she was there. जो Asian Development Bank की meeting चल रही है and South Korea. So she says कि we need to focus on investments and infrastructure if we are talking about sustainable growth. So definitely it is one of the components. So global economy in the past few years, it has faced trials and tribulations. So adding countries, they have made efforts to protect vulnerable sections of the society at the cost of higher government borrowing. So that's all for today. Thank you so much for joining us, and do hit the like button and also subscribe to the channel, and please share this video. Thank you so much for joining us.